or specialty chemical manufacturer just saw mutual fund giants like Kotak, HDFC and Axis pick up over 98 lakh shares in a 667 crore rupees of a block deal, and that too at an 8% premium over the floor price. Meanwhile, another chemical player has successfully commissioned its solar grade hydrofluoric acid in record time, and अब वो अपनी capacity को double करने जा रहे हैं to lead the clean energy supply chain. These two companies are strategically placed in high margin, high growth sectors. Curious to know who they are? Stay tuned in the video. Hi everyone, welcome to another edition of Noisemaker, जहां हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं और फोकस करते हैं उन कंपनीज पर जो अक्सर स्पॉटलाइट में नहीं होती, बट हैव स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू डिलीवर इन द लॉन्ग टर्म. आई एम भूमिका, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एट Desvelado Advisory, और आज हम बात करेंगे तो ऐसी कंपनीज की जो बिजनेस में सॉलिड प्रोग्रेस कर रही हैं, एंड इफ करंट लेवल रिमेन्स इंटैक्ट they might continue to grow even further. But before jumping onto the companies, let's see the disclaimer first. Any discussion, facts or writing provided are for information purposes only and do not constitute any buy or sell recommendation. Please conduct a research before making any kind of investment decision. Now let's move on to the first company, which is Jubilant Ingrevia Ltd. This company basically makes a variety of chemical ingredients that are used in many different industries like food, pharma or agriculture. Now, apart from making and selling standard products, company also works directly with pharma and agrochemical companies to develop and manufacture special chemicals just for them, basically based on their specific needs. On June 14, 2025, company ने witness किया एक major block deal which is worth ₹667 crore, जहां 98.65 लाख शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ है एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹676 पर शेयर. बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल, मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस वर अमंग द की बायर्स. ये इंस्टीट्यूशंस ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिमांड है, क्लियरली दिखाता है ग्रोइंग कॉन्फिडेंस इन द कंपनीज शिफ्ट towards high margin specialty chemicals, जो कि backed है 600 crore rupees के capex plan से for FY26 and its ambitious pinnacle 345 vision to achieve 10,000 crore rupees in organic revenue. और सबसे interesting part ये है, buying has taken place at an 8% premium over the floor price of 627.45 rupees, which sends a strong investor conviction signal, जो कि स्टॉक की विजिबिलिटी इंप्रूव करेगा, लिक्विडिटी बढ़ाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल को भी अट्रैक्ट करेगा. इफ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स, कंपनीज FY25 रेवेन्यू केम इन एट 4178 crore rupees, growing by 1% year on year. EBITDA rose 557 crore rupees with EBITDA margins improving from 11% to 13%. Net profit surged 37% year on year to 251 crore rupees with margins up from 4.4% to 6%. Looking ahead, company aim कर रही है 15 to 20% CAGR in its specialty chemicals business, which is backed by strong momentum from 25 plus new CDMO molecules जो FY25 में add किए गए हैं across pharma, agro and semiconductor segments. दो major agrochemical CDMO contracts FY27 तक ramp up phase में जाएंगे, which would further boost the volumes of the company. हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स का शेयर बढ़ रहा है और कॉस्ट स्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रहा है. इस वजह से कंपनी का टारगेट है EBITDA मार्जिन्स को 22% प्लस मेंटेन करना विद पोटेंशियल टू इवन रीच 25%. अगर हम ग्लोबल लेवल पर भी परफॉर्मेंस देखें तो वो भी स्ट्रॉन्ग है. इंटरनेशनल रेवेन्यू 45% तक पहुंच गया फ्रॉम 34% लास्ट ईयर, ड्राइवन बाय डिमांड फ्रॉम US, यूरोप एंड जापान. इस मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए कंपनी सीनियर लीडरशिप को हायर कर रही है की रीजन्स में, ताकि क्लाइंट रिलेशनशिप्स और स्ट्रॉन्ग हो सके और एक्सपोर्ट लेड लीडरशिप एक्सेलरेट हो सके, स्पेशली जबकि कंपनी को चाइनीज प्लेयर के कंपैरिजन में फेवरेबल टैरिफ का भी बेनिफिट मिल रहा है. नाउ दैट्स इट फॉर दिस कंपनी एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी व्हिच इज Tanfac Industries Ltd. इंडिया की टॉप कंपनीज में से एक है Tanfac Industries, जो कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और उससे बनने वाली दूसरे केमिकल्स व्हिच इज डेरिवेटिव्स बनाती है. ये केमिकल कई इंडस्ट्री में यूज होते हैं जैसे कि फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, एल्यूमिनियम, रेफ्रिजरेंट्स एक्सेट्रा. दिस कंपनी हैज सक्सेसफुली कमिशन्ड इट्स 5000 TPA solar grade dilute hydrofluoric acid, which is DHF, plant after getting product quality approval from a major solar energy player. सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 6 to 8 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया गया.
और अब कंपनी ऑलरेडी फेज 2 के लिए तैयार हो रही है, जहां टारगेट है कैपेसिटी को डबल करके 10,000 TPA तक ले जाने का इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये एक मेजर माइलस्टोन है क्योंकि टैनफैक बन गया इससे इंडिया का पहला केमिकल मैन्युफैक्चरर जो कि हाई प्योरिटी DHF बना रहा है, जो सोलर इंडस्ट्री के लिए क्रिटिकल रॉ मटेरियल होता है। जब डिमांड बढ़ रही है हाई क्वालिटी locally made solar inputs के लिए, तो ये move not only supports India's renewable energy emissions but also positions the company strongly in high margin solar chemical segment, driving future revenue और profit दोनों की growth। अगर हम financials की बात करें, FY25 revenue rose 47.3% year on year to 556.9 crore rupees. EBITDA grew 69% year on year to 131 crore rupees with margins improving to 23.6%. Net profit jumped 68% to 88.1 crore rupees with margins at 15.7%. Looking ahead, company एक बड़ा step ले रही है towards forward integration by using hydrofluoric acid, which is HF, to manufacture high value products जैसे refrigerant gases. ये initiative backed है एक strategic tie-up के साथ with a top Japanese partner, जो नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स को अनलॉक करेगा और ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल मार्केट में टैनफैक की पोजीशनिंग और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। साथ ही कंपनी अपना फोकस और डीपन कर रही है ऑन सस्टेनेबिलिटी विच इज ड्राइवन बाय R&D, जैसे कि फ्लोरिनेटेड केमिकल्स एंड स्पेशलिटीज पे काम करना थ्रू AHF फ्लोरिनेशन एंड प्लांट अपग्रेड्स विद PLC सिस्टम्स एंड IoT बेस्ड एनर्जी मैनेजमेंट टूल्स। सो बेसिकली गोल सिंपल है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, एफिशिएंसी बूस्ट करना और एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन रेडी करना इको फ्रेंडली फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स की, जो अलाइन करे ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन केमिकल्स के साथ। नाउ लेट्स रिव्यू सम ऑफ आवर प्रीवियस पिक्स। फर्स्ट कंपनी इज NIBE Ltd from 1730 rupees to 1875 rupees, which is up by 8.3%. Shakti Pumps Limited from 970.6 rupees to 980 rupees, 0.9%. Repco Home Finance Limited from 427 rupees to 425 rupees, down by 0.4%. Then ICRA Ltd from 6621 rupees to 6800 rupees, which is up by 2.7%. Then at last Cigniti Technologies Ltd from 1585 rupees to 1676 rupees, which is up by 5.7%. Now let's review our today's companies in the summary. First company is Jubilant Ingrevia Ltd. On 14th June 2025 कंपनी ने एक ब्लॉक डील हुआ है जो कि वर्थ 667 करोड़ रुपीस का है, जिसमें 98.65 लाख शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ है एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 676 रुपीस पर शेयर। की बायर्स में शामिल है बिग इंस्टीट्यूशन नेम्स जैसे कि कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, जो क्लियरली दिखाता है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द कंपनीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी। सेकेंड कंपनी वॉज टैनफैक इंडस्ट्रीज। कंपनी ने अपना 5000 टन पर एनम सोलर ग्रेड डाइल्यूट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड DHF प्लांट सक्सेसफुली कमीशन कर दिया है आफ्टर रिसीविंग प्रोडक्ट क्वालिटी अप्रूवल फ्रॉम अ लीडिंग सोलर एनर्जी प्लेयर। That's it for today's Noisemaker. अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो you can scan the QR code to read the full report. We'll be back soon with more simple and clear market updates. Until then, stay curious, stay informed and stay ahead of the market.